हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो विदाउट एनी रेफरेंस फ्रेम वी कांट फाइंड एनी position of particle. So to find particle position we use two methods. First method is position vector and the second method is by coordinate axis. So कोऑर्डिनेट एक्सिस को कल हमने डिस्क्राइब कर दिया था, तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं. ओके, सो नाउ आई ड्रॉ वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system x, y and z, and this is particle P and this is the axis position vector. Sorry, this is not axis, this is position vector, OP vector. This is origin and it is called R vector. And now I have to find the value of position vector. So it is something xi cap plus yj cap plus zk cap. So how do we find this value xi cap, yj cap and z cap? I have to draw one perpendicular to xz plane, one perpendicular to zy plane and one perpendicular to yx plane, and this is z axis and this is x and this is y. Okay, now I have to mix them. थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, समझ जाओगे ना आप, तो होशियार बच्चे हो. ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस. दिस इज वाई, सो दिस इज ऑल्सो वाई एंड दिस इज जेड, सो दिस इज ऑल्सो जेड. If I draw one line from O to, let's suppose this is A point, this is B. Okay, so now we have one triangle OBA. Triangle OBA. So this is X, this is Z. So we can easily find out what is OA. So in triangle OBA, now we have to find OA equals to OB vector plus BA vector. Okay, so OA vector is what? OB vector is Z k cap plus X I cap. So OA vector is Z k cap plus X I cap. So I have this one, this line, and this is also y. So we can easily find out OB vector. So in triangle OPA, OP vector equals to OA plus AP. OA की वैल्यू क्या है? ZK cap plus XI cap. AP क्या हो जाएगा हमारे पास में? YJ कैप. सो OP वेक्टर इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कल बताया था मैंने, लाइन जॉइनिंग विथ फ्रॉम O origin to particle P, and now I have to find position of moving particle. Position of moving particle. If my particle is moving, not rest, it is not in rest, it is moving. Particle P1 when time is t1 and particle p2 position when time is t2. This is origin. If I join this line, this is called position vector, and this is r1 vector and this is r2 vector.
and this is displacement between P1 and P2. P1 and P2 का displacement. Okay, so this is what R2 minus R1. This is from vector addition law, vector triangle law, है ना. ये हमारे पास में O से P1 पर जा रही है एक लाइन, ये O से P2 पर जा रही है, और अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ मूव करता है तो बताया था कि हेड एंड टेल ऐड हो जाते हैं. तो ये R1 वेक्टर प्लस इस दिस इज डेल आर इक्वल्स टू R2 वेक्टर, देन डेल आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ओके, so we have 2 times del t equals to t2 minus t1. Now we can easily find out here velocity. Velocity की definition क्या होती है? Change in position with respect to time. So change in position with respect to time equals to r2 minus r1 upon t2 minus t1. Okay. So if we find instantaneous velocity, then limit del t tends to 0, del r upon del t equals to dr upon dt. Okay, now if we have to find acceleration, what is acceleration? The change in velocity with respect to time, v2 minus v1 upon t2 minus t1. What is instantaneous velocity? Instantaneous acceleration, limit del t tends to 0, del v upon del t, it is dv upon dt. Okay, so this is position of moving particle. Okay, now I have to find what is Galilei transformation.